Assalamu alaikum dear fellows, my name is Saifullah. I welcome you all to the platform of Javed Publisher. अपनी आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 के कंप्यूटर स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 4 MS वर्ड बेसिक फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग की एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी बुक्स की तरफ और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैश कमांड इज यूज्ड टू रिवर्स द अनडू एक्शन। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन बी रीडू, ऑप्शन सी अनडू या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी रीडू। डैश द टेक्स्ट मीन्स मूविंग द डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर लोकेशन। कॉपिंग, पेस्टिंग, मूविंग या नन ऑफ दीज। द राइट ऑप्शन इज मूविंग। द बटन increases the text size. Big size, increase font size, large font या grow font. The right option is D, grow font. The feature can be used to replace an existing text with the new text. Replace, find, go to or cut. Replace feature. Question number 2, fill in the blanks with the help of given words. Dash is the shortcut key to check the spelling and grammar of the text. F7. Dash tool makes the text darker than the rest of the text. Bold tool. Dash case reverses the cases of all the letters. Toggle case. The process to correct or modify the text in a document is called editing. Question number 3. Answer the following question. Question number 1. What is formatting? Formatting text refers to changing the text appearance to make it attractive by changing its alignment, style, font, size and font color. Question 2. What is the use of find and replace tool? The find feature can be used to search for all the occurrences of a given word or phrase. The replace feature can be used to replace an existing text with a new text. Question 3. Name any 4 examples of font types. The examples are Verdana, Arial, Calibri, Times New Roman. Question 4. What are the shortcut keys to go to the one character up, down, left and right? The arrow keys are used to go one character up, down, left and right. Write a few words about the spelling and grammar checking tool. Using the spelling checking tool, all the spellings and grammatical mistakes that may have occurred while typing can be rectified and corrected. Our next question is match the following. In column A, the given words are bold, underline, italic, find and paste. हमने इनको इनकी रिस्पेक्टिव शॉर्टकट की के साथ कॉलम बी से मिलाना है। बोल्ड के लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है कंट्रोल प्लस बी, फॉर अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू, फॉर इटैलिक कंट्रोल प्लस आई, टू फाइंड कंट्रोल प्लस एफ एंड टू पेस्ट कंट्रोल प्लस वी। तो व्यूअर्स, ये थी हमारे चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ कि इसके साथ ही आपको बहुत अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना आ गया होगा। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।